Yeah. So, first of all, can I get a yes for how many of you are preparing for the IPMAT 2024 examination in that case? Uh, okay, so I got many hands raised. Okay, here. Uh, so your examination. So should I discuss first of all what should be your strategy for IPMAT 2024, or like we will proceed according to you, or guys? Oh, so mostly are from are for 2025 exam. 2025. Maybe you can start off with a small thing for the 2024 people. And then Okay. for the 2024, we can concentrate on how to crack the interviews. Okay. Sanjana, just share your strategy. What was your strategy for the preparation of stat? Because you were also preparing for IPMAT also. And so how you dealt with the mock test. So can you just share a brief on that? Okay, so basically what I did was I had classes for, oh, can you hear me, Sanchit? Yeah, yeah. Huh. So I had classes for IPMAT for an entire year, and I used to go for these classes every Sunday. The thing is, the classes only built up on the base. What you are supposed to do as a student is you are supposed to, whenever your institute releases a mock, you're supposed to tackle that mock. When you tackle that mock, you'll be able to see exactly where and where you are losing marks, in which places you have to improve. So, like, suppose you're looking at the English, the VA part. So you'd first look at that, take a mock. When you attempt a mock, you see that, okay, I'm losing marks in this sort of questions. And then you go back, you try to practice these kind of questions, and then you come back and you write the next mock, just keeping in mind that one section. So what you have to do at the beginning part, or like towards the middle of your preparation, is just like individual parts of your examination. Like you have to concentrate on that. Okay. So, Sanjana, just I'm pausing you a little. Can you just provide a brief answer of like if someone is preparing right now, if someone is starting from zero, preparing for IPMAT 2024, which is on like 20th May, I guess. So how you will start preparing for it? Can you just provide a brief of it? Okay, Like only so 20 days are remaining for that exam. 20 days. So you'll have your set of mocks. Attempt your first mock. Okay. First thing in the morning, when you do, attempt the mock. When you attempt the mock, you can see, okay, this is the place where I have to improve. This is the place. Where you start off with your um always English is the most scoring section. Start off with English category of the questions that I'm getting correct. And when you are when you see that, when you analyze that, remember, when you look at what you get correct, do not be overconfident that you will get it correct again. Just make sure that first you concentrate on what you're getting wrong. And when you see that, you can practice on those questions. Now, the next thing to do is math. Math daily, just do a few questions. I know the first section of IPMAT is the math section is really, really hard. So I'd say that the second section is way more scoring. But the first section, you should at least be able to crack 3, 4 questions. If you do that, you'll be able to get enough marks to uh, to remove the effect of the negative marking that comes if you put in a wrong answer. So if you do this on the daily basis, you'll be able to see a drastic improvement from what you had on the first day as compared to what you have on, suppose, after a month. Because the entire, oh, it's not a month, sorry, what you have in like maybe 2, 3 weeks. What the point of the whole thing is, just you keep doing your mocks, you keep preparing, you keep making sure that whatever mistakes that you've made, you analyze it, and you try to make sure that you don't repeat the same mistakes again. Oh, so what in the next 20 days you have to do is just write maximum mocks as you can. The give FLTs, give full length mock tests that are there on the iQuanta's website. Just prepare for them only. I guess because जब तुम लोग mocks दे रहे हो
यू आर गेटिंग एन आइडिया कि मेरे को एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है. तो इट्स लाइक दैट. ऑल्सो इन चैट देयर आर मेनी क्वेश्चंस लाइक, Yeah, okay, yeah. can you give some suggestions for a non-math student? So So Sanjana, you were a non-math student, I guess. no, I So was an if you, applied math student, so I did oh, not have any trigonometry. I had very, very basic math as compared to core math. So what I did was I concentrated on trigonometry as like a section because I had to start it from the beginning. So daily I did a little bit of trigonometry. I used to go to maths tuition for just school for boards, and over uh, just a minute. Yeah, well, yeah. So used to go to maths tuition just for normal board preparation. And over there, I'd make my tuition teacher teach me a little bit of trigonometry so that I could figure out trigonometry. Yeah, trigonometry does come in IPMAT. There are a few trigonometric questions that come. Um, okay. About trigonometry you are talking. So in trigonometry, there are questions like the last year I remember one question was from what is the range of sin x minus sin y. So it was like कुछ root पे उसका आंसर था and that is like वो basic है. That that you can solve according to the formulas given. So not trigonometry जिसका tough part आता है, but you know the if concept I पता share, होना चाहिए yeah, कि अगर तुम नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो कॉन्सेप्ट तुझे पता नहीं है तो कॉन्सेप्ट को पहले उसको पढ़ो, उसके बाद उनका क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. देन यू विल बी एबल टू सी कि वेदर योर अंडरस्टैंडिंग इज equivalent if it's matching to whatever you're trying to attempt. Okay. yeah. So Then like समझे like मैं share करता हूँ इसके बाद okay. okay. So, अगर कोई भी नॉन मैथ स्टूडेंट है, व्हाट यू शुड डू इन द नेक्स्ट 20 डेज है संजना से कि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. एंड सेकंड इज राइट एज मैक्सिमम मॉक टेस्ट एज यू कैन. थर्ड पार्ट जो मैं बोलना चाहूंगा, लाइक यू हैव 20 डेज लेफ्ट फॉर दिस एग्जाम. व्हाट यू कैन डू इज मॉक टेस्ट तो एक ना एक दिन रोज प्रैक्टिस करना है. सेकंड जो मेरे को करना है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा बट बेसिकली बिकॉज मॉक टेस्ट में कैसे सॉल्व करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल ABC मैथ्स में खासकर कि अगर ये क्वेश्चन मेरे को आसान लग रहा है तभी मैं उस पर जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा. ए का मतलब अभी करो राइट नाउ बिकॉज यू नो मैथ्स का कट ऑफ कितना जाता है इट्स लाइक क्योंकि वो टफ रहता है हर किसी के लिए. तो हर साल मैथ्स का कट ऑफ इट्स लाइक आपको क्लियर करना है बट कुछ लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चन रहता है. वर्बल में वर्बल जैसा कट ऑफ नहीं जाता. तो उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन जो बहुत सिंपल लग रहा है, लाइक क्वेश्चन सिंपल जहाँ से आते हैं वो अर्थमेटिक का पार्ट होता है. अर्थमेटिक नंबर सिस्टम एंड समटाइम्स टीडीएस टाइम डिस्टेंस स्पीड जो अर्थमेटिक का पार्ट है उन पे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं. तो पहले मैं उनको ट्राई करूंगा और वो देखूंगा कि सिंपल क्वेश्चन कौन सा है जो मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, अभी करूंगा उसको. फिर जो लग रहा है कि थोड़ा नंबर सिस्टम्स का कौन सा मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं बाद में करूंगा. एंड सी इसको छोड़ दो सी क्योंकि कोई टफ क्वेश्चन है नेगेटिव मार्किंग है तो उसको मेरे को सीधी बात छोड़ना पड़ेगा. एंड दैट इज की वही ऐसे मैं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करूँ. सेकेंड चीज मैथ्स के लिए कि एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है जो लाइक फाइनल स्टेट में दिए रहता है आई क्वांटा की. उसमें जो PYQs हैं उसमें जो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है क्योंकि उसके ऊपर ही क्वेश्चंस बनेंगे आगे जाके. तो मैं सिर्फ वो लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट को समझूंगा जल्दी जल्दी. तीसरी चीज है जो भी मॉक टेस्ट में गलतियां हो रही हैं उसको नोट डाउन करो. मे बी वो इंग्लिश में हो, मे बी वो वर्बल में हो, मे बी वो मैथ्स में हो, मे बी वो शॉर्ट आंसर्स में भी हो. तो उसको मैं अलग से एक सेपरेट डायरी में नोट करूंगा. एंड ऐसे मैं एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले उसको देखूंगा कि हाँ मेरे से ये गलती हुई थी. देन ऐसा नहीं करना है. दिस इज द स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 20 days. If I talk separately about verbal, I guess verbal पे संजना can guide you best. Sanjana, for verbal, what will be your strategy for the next 20 days? for verbal, Yeah. um, तो ऑलरेडी तुम लोग ना हर दिन मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसमें यू विल बी गेटिंग एन एनालिसिस कि क्या गलत हो रहा है, किस क्वेश्चन में गलत हो रहा है, उस क्वेश्चन का क्या आंसर है. उसको पहले समझा, समझा के यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये ऐसे होना चाहिए. तो वर्बल का इट्स अ लिटिल बिट मोर इंटुइटिव देन व्हाट math the math sections are. तो उसके लिए you'll have to sit and
think a little bit about why, what is going wrong, and then उसको कैसे ठीक करना है. It's just, you just keep doing the mocks, and if you keep analyzing yourself and correcting where you go wrong, you'll be able to do it. ओके सो लाइक मैक्सिमम जो मैं जस्ट बता सकता हूँ नेक्स्ट 20 डेज के लिए इज यू हैव टू राइट एज मच मॉक टेस्ट एज यू कैन। और जो सेपरेट मॉक टेस्ट होते हैं दैट इज बेबी मॉक टेस्ट होते हैं एक सेपरेट टॉपिक पे, अलजेब्रा पे, प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अलजेब्रा, पीएनसी एंड नंबर सिस्टम। ये तीन पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं इफ यू वांट टू एस मैथ वाला पार्ट। शॉर्ट आंसर्स में भी इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं फ्रॉम अलजेब्रा, फ्रॉम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो इसको इस करने के लिए यू हैव टू लाइक प्रैक्टिस क्वेश्चंस इसके, कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा नेक्स्ट 20 डेज के लिए। लाइक यू नो हार्ड वर्क इज द की, नो देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अब नेक्स्ट 20 डेज में अगर आपने पहले हार्ड वर्क नहीं करे तो आप स्मार्ट वर्क भी नहीं कर सकते इधर पे। सो व्हाट यू कैन डू इज कि हार्ड वर्क करो, जितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है तो उतने करना पड़ेगा। नाउ जो मुझे चैट बॉक्स में ज्यादातर क्वेश्चन दिख रहे हैं कि हाउ मेनी मॉक्स डिड यू राइट, सो मैं लगभग अगर मैं स्पेसिफिकली आई एम इंदौर का बात करूँ तो मैंने 15 to 20 मॉक टेस्ट तो सॉल्व करे थे मेरी 1 ईयर प्रिपरेशन के दौरान। IPMAT रोहतक के भी सिमिलर 15 to 20। हाउ मेनी मॉक टेस्ट डिड यू रोट लाइक संख्या, कैन यू जस्ट प्रोवाइड द मेरा नंबर के साथ? तो, बिकॉज मेरा लाइक दूसरा वाला स्टोरी है कि इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ जर्नी. मैंने तो टोटल में आई थिंक 15 to 20 मॉक्स मैंने किया, और वो इट इंक्लूडेड इंदौर, रोहतक एंड जिपमैट का प्रेपरेशन. सो लाइक आई सॉ समवन आस्किंग कि वो पहला वाला मॉक में कितना लगा मुझे. इंदौर की 150 around मिली. Or the thing is, if you keep improving, my Rohtak scores went up really high to like around 250 in my mocks. So it's kind of the improvement is very, very visible if you put in the effort. And ओह एक और, हाँ हाँ, एक और कंटिन्यू क्वेश्चन है कंटिन्यू। कि हाउ टू मैनेज 12th बोर्ड्स एंड IPMAT. तो हाउ टू मैनेज 12th बोर्ड्स एंड IPMAT मैंने तो when in February the application form got released, that time I got to know I had to write SAT, and I had not written SAT until then. तो मेरा प्रेपरेशन ही नहीं हुआ. और जब वो द आफ्टर गेटिंग टू नो वो पहला वाला SAT का एग्जाम अपने मैथ एग्जाम की डेट पर हुआ, तो मैं तब नहीं लिख पाई. तो उसके बाद March 31st बोर्ड्स गॉट ओवर. उसके बाद एक महीने के लिए मैंने पढ़ा, और पहला वाला स्कोर थोड़ा ऐसे अच्छा तो नहीं था. आई गॉट 1330, एंड देन उसके बाद आई रोट इट वंस मोर एंड आई गॉट 1315. इट्स इनफ to cross the threshold of 1300, which was what our base was for the cutoff was for last year. ओह ओके, या तो लाइक सेम स्ट्रेटेजी से ही फॉलो का। ऑल्सो लाइक मेरा मॉक टेस्ट का फर्स्ट स्कोर वाज, आई एम इंदौर में 171 था, एज फार आई रिमेम्बर, एज फार एज आई रिमेम्बर। तो लाइक वहां से मेरा बढ़ता गया था लाइक 170 प्लस 200 समथिंग कभी कभी, तो ऐसा ही था। लाइक क्वेश्चंस मेरे को जो मिल रहे हैं, शुड आई प्रैक्टिस विद वोकैबुलरी बुक्स लाइक नीतू सिंह एंड ब्लैक बुक, सो आई डोंट नो अबाउट नीतू सिंह एंड ब्लैक बुक। बट व्हाट आई वुड से इज कि अगर तुम 1 ईयर प्रिपरेशन का हम अलग से अभी बताएंगे, बट व्हाट आई थिंक कि वोकैबुलरी के लिए द बेस्ट इज वर्ड फॉर्म ईडीसी एंड एडिटोरियल वर्ड्स जो आर्टिकल्स में आते रहते हैं वो लाइक बेस्ट होता है। डू आई नीड टू स्टडी एलआर फॉर आईपीएमएट और नो, लाइक एलआर तो सिर्फ आई एम रोहतक में आती है। हाउ टू मैनेज 12 प्रिपरेशन इसका मैं अलग से बताएंगे हम दोनों। एंड ओके, हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड एज अ साइंस स्टूडेंट, ओके इसका भी मैं लाइक मेरे को साइंस स्टूडेंट्स जो प्रिपेयर करे थे मैं उनका बताऊँ वो कैसे करते थे। देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग मॉक्स, ओके 2025 के लिए भी अलग से हाउ इज वर्ड फॉर्म ईडीसी दैट इज द बेस्ट फॉर बीए मैं बोलूंगा। और लाइक सेम चीज के अराउंड मेरे को क्वेश्चन दिख रहे हैं, हाउ मेनी मॉक टेस्ट और लाइक 1 ईयर प्रिपरेशन के लिए 20 डेज में कैसे प्रिपेयर करना है, वी ऑलरेडी कवर्ड दैट, बट द मेन थिंग इज कि 20 डेज में आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन कि आपने पुराना कितना कवर कर रखा है, बिकॉज यू नो
अगर मैं 1 महीने में प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, इट इज इजी टू क्लियर दिस एग्जाम। लाइक मेरे बहुत सारे रूममेट्स हैं जो बस उनको पिछले दिन गोवा में थे, एंड देन दे गॉट टू नो कि हाँ मेरा कल आईपीमेट का एग्जाम है, वो लिख कर आ गए, उनके लाइक मेरे से भी ज्यादा नंबर स्कोर कर लिए, एंड वो मेरा रूममेट। तो इट्स लाइक अनप्रिडिक्टेबल भी है, क्योंकि लाइक उसने उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, लाइक वो पहले से इतना प्रोफिशिएंट था उसकी स्किल्स में। तो व्हाट आई थिंक इन द नेक्स्ट 20 days, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट एंड मॉक टेस्ट ही हेल्प करेगा, बिकॉज मार्क्स भी बहुत कम आएंगे मॉक टेस्ट में शुरू शुरू में, बिकॉज इफ अगर मैं जीरो से स्टार्ट करूँ, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, मेरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है, तो लाइक मार्क्स स्टार्ट में तो बहुत कम आएंगे। आई गेस मॉक टेस्ट से इतना आइडिया तो मिल जाएगा कि मैं एग्जाम में कैसा परफॉर्म करूंगा। ओके, तो धीरे धीरे कर्व जैसे आगे बढ़ता जाएगा, ऐसा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होगा डिमांड सप्लाई कर्व की तरह, तो लाइक वही होगा मॉक टेस्ट में भी सेम, कि शुरू में बहुत कम आएगा, ऐसा ही कर्व बनेगा, क्योंकि शुरू में व्हाट वर योर मॉक स्कोर्स एंड ओके, ठीक है। तो आई थिंक इसके बाद मैक्सिमम मेरे को पता चल जाए कि हमको 2025 के लिए क्या स्ट्रेटेजी देनी चाहिए। सो 1 ईयर स्ट्रेटेजी से मैं शुरू करता हूँ। ओके, तो अगर मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी अराउंड 15, नहीं, मई में स्टार्ट करी थी मैंने, 2022 की मई में, एंड साइमल्टेनियसली मेरे को क्लास 12 का भी कवर करना था एंड सारी चीजें। तो शुरू में मैंने क्या फोकस करा कि मैं स्कूल को थोड़ा कम टाइम दूंगा, एज मेरे समर वेकेशन चल रहा है, क्योंकि क्लास 12 इज काइंड ऑफ मैनेजेबल, तो इसलिए, क्योंकि मेरा कॉमर्स प्लस मैथ सब्जेक्ट था, सो इट वाज काइंड ऑफ मैनेजेबल। ठीक है, तो मैंने धीरे धीरे लाइक शुरू से जो बिग You had कॉन्सेप्ट होते हैं commerce with वही। maths. यस। Okay. या, सो कैन यू जस्ट टर्न ऑफ योर माइक प्लीज? It's turned off. I turned it off. ओके ओके, ठीक है। सो लाइक शुरू में फर्स्ट ऑफ ऑल आई स्टार्टेड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट बेसिक क्या है, क्योंकि शुरू में इन जो मैं कुछ मतलब जो भी थी, तो उसमें लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक कॉन्सेप्ट जो भी है अरिथमेटिक नंबर सिस्टम, बिकॉज दो थिंग्स वर न्यू फॉर मी, तो मैंने लाइक उसी से शुरू करा। एंड देन लाइक व्हाट वाज माय की विश कि मेरे को 5 बार रिवीजन करना है कोई भी टॉपिक का 1 साल में, लाइक टिल दिसंबर मेरे को 5 टाइम्स रिवीजन कंप्लीट करना है हर एक कॉन्सेप्ट का। तो वैसे मैंने शुरू करा, और मॉक टेस्ट मैंने जनवरी के अराउंड अटेंड करना शुरू करे, बिकॉज मेरे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे 1 ईयर प्रिपरेशन के टाइम पे। सो व्हाट 2024 2025 वाले पीपल शुड फॉलो दिस, कि मेरे को 1 साल में लगभग दिसंबर तक, अभी यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो टिल दिसंबर मेरे को हर एक कॉन्सेप्ट का हर एक जो टॉपिक है, इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसके मेरे को 5 बार रिवीजन कंप्लीट करना है। एंड धीरे धीरे ही मैं शुरू करूंगा, नॉट लाइक कि मैं पहले से ही मॉक टेस्ट करूँ। तो लाइक मैंने एक बार रिवीजन कंप्लीट करा, फिर उसका जो डेली मॉक टेस्ट है, जैसे दैट इज टॉपिक वाइज वाइज जो मॉक टेस्ट है, मैंने वो अटेम्प्ट करा, तो आई गॉट एन आइडिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसे मैंने टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट शुरू करे। सेकेंड चीज है, सेकेंड थिंग इज कि मेरे को न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू शुरू पढ़ना करना है। लाइक जो न्यूज़पेपर्स, लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, यू हैव टू राइट 4,000 वर्ड्स आउट ऑफ दैट। लाइक तुम कुछ भी आर्टिकल पढ़ रहे हो, एडिटोरियल पढ़ रहे हो, 1 साल, 1.5 years, जितना भी प्रिपरेशन कर रहे हो टिल द फाइनल डे ऑफ द एग्जामिनेशन, यू हैव टू एटलीस्ट राइट 4,000 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी, क्योंकि वी नो कि हमारी इंग्लिश इतनी प्रोफिशिएंट नहीं है। लाइक आई अज्यूम कि मेरी मेरी तो बिल्कुल भी नहीं थी इन द वर्बल सेक्शन। तो मैंने 4,000 वर्ड्स न्यूज़पेपर से पढ़े, लाइक कोई भी आर्टिकल्स पढ़े, एऑन एसेस जो करके होता है उस पे पढ़े, तो उससे ही मैंने 4,000 वर्ड्स लिखे कि हाँ इसका मेरे को रिवाइज करना ही करना है। So I completed 4,000 words out of word farm made easy. So yeah, I think ये on essays, the Hindu editorials, word farm etc. आई थिंक ये 3 चीजें आरसी को एज करने के लिए, वोकैबुलरी को एज करने के लिए बेस्ट है। ऐसे मैंने 4,000 वर्ड्स का टारगेट पूरा करा। देन टिल अराउंड जनवरी आई स्टार्टेड गिविंग मॉक टेस्ट। शुरू में बहुत ही कम मार्क्स स्कोर हो रहे थे,
देन आई वेंट ऑन टू कि हाँ मेरे अच्छे से रोहतक में भी 350 प्लस 320 प्लस स्कोर हो रहा है आराम से। तो ऐसे ही लाइक पहले मैंने अपना बेसिक चीजें स्ट्रॉन्ग बेस जो है मेरा उसको स्ट्रॉन्ग करा एंड देन आई वेंट ऑन टू की मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर करना है। ऑल्सो लाइक संजना शेयर योर लाइक 1 year strategy. So I mean, the 1 year strategy is very, very similar to संचित. जो संचित ने करा था वो बहुत सिमिलर है. मैंने मेरा कोचिंग सेंटर मुझे हर फ्राइडे को मॉक्स दिए. तो हर फ्राइडे स्कूल के बाद मैं 2 घंटे के लिए बैठ के वो मॉक्स किए थे. um, वो सितंबर में था. और जो मैंने सितंबर में करा वो बहुत लाइक इम्पोर्टेंट था कि सारे कॉमर्स वाले कॉलेजेस के लिए वो उनके एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए वो इट वाज सफिशिएंट उन उसको करने के लिए. तो उसके बाद वो मेरी प्रेप फॉर getting in was just like all those of you who are preparing for IPMAT in the next 20 days. मेरा भी 1 महीने में हुआ वो 1-2 महीने में हुआ वो SAT वाली प्रेप. तो उसमें ना द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि क्वेश्चंस को सॉल्व करो. You have like if you're doing it in a short period, questions को solve करो. If you're doing it in a long period, पहले concept को understand करके you have to increase the level of difficulty as you go. तो अगर मैं Jan Feb, okay, so if I take this for the 2025 students, अभी 2 महीने के लिए I will sit and I will learn the concepts and I will do basic questions. Then for the next 3 months, I will do medium wali questions and I will start off with all of the mocks. Uske baad, the remaining time, tough questions and a little bit going back to whatever easy and medium questions that we've already done before, usko revise करके वो सारे के सारे mocks जो आ रहे हैं ना, उसको करो. That the continuous doing of mocks is what you require for क्रैकिंग द एग्जाम. इंटरव्यू के लिए तो अलग सा प्रिपरेशन है वो. आई थिंक हम कुछ देर बाद करने वाले इंटरव्यू के. ओके सो देयर वर मेनी क्वेश्चंस ऑन कि क्या अरुण शर्मा करनी चाहिए. आई डोंट थिंक कि अरुण शर्मा इतना वर्क करेगा बिकॉज कोचिंग का मटेरियल वैसे ही बहुत सारे सोर्सेज से बना हुआ है. दैट इज फ्रॉम कैट के प्रीवियस क्वेश्चन क्या उसको रेजोनेट कर रहे हैं था. तो आई गेस अरुण शर्मा तो लाइक मेरे को काम नहीं आई थी. मैंने कॉन्ट की परचेज नहीं करी थी. वर्बल के लिए आई डोंट थिंक इतना वर्क करेगा. बट काइंड ऑफ वर्बल में यूज कर सकते हो बट नॉट इन कॉन्ट बिकॉज नहीं आएगा काम. आई डोंट थिंक अरुण शर्मा काम आएगी इतना. समवन आस्क्ड मी कि मॉक का एनालिसिस में करते क्या हो, मार्क्स बढ़ते थे. तो मॉक के एनालिसिस में मैं जो करती थी, आई यूज टू सी ओके ये किस टाइप की क्वेश्चन है कि मुझे वो गलत आ रहा है. Because when you're doing the questions, you'll get that similar set of questions all wrong. If you get the similar set of questions all wrong, then you know that there is something wrong with the knowledge about those kind of questions. तो पहले basics से शुरू कर. उन questions के लिए basics से शुरू कर कि okay, अगर ये VA का question है और VA में कुछ टॉपिक, संचित एक टॉपिक बता VA में. VMA reading comprehension vocabulary. Yeah, like it is similar to SED. हाँ ठीक है. तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्वेश्चंस में मुझे मिस्टेक्स आ रहा है. तो ये क्यों हो रहा है वो पहले आई हैव टू फाइंड आउट. जब मैं वो देखती हूँ तो तब पता चलता है कि ठीक है, जब मैं पढ़ती हूँ मैं पूरा का पूरा नहीं पढ़ती हूँ, मैं ऐसे ऐसे ही पढ़ती हूँ. इसलिए मेरा क्वेश्चंस के आंसर बहुत गलत है क्योंकि द क्वेश्चंस आर आस्किंग वेरी वेरी स्पेसिफिक थिंग्स. So then I realized कि I have to give more time to sit and read the questions. तो when I did that, it takes some time to condition yourself to do that. So time you have to give yourself, okay, for that.
And another question I got is, if I'm an Indian, do I need to give SAT exam? No. If your passport, okay, this is completely dependent upon your passport. If your passport is an Indian passport, then you are not eligible for the international category. The international category is a supernumerary, 5 supernumerary seats for those who have passports which are not Indian. Okay. मेरा तो अभी मैं बता सकती हूँ, मेरा ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट है, पर मैं इंडिया में 7 साल से रहती हूँ. तो मेरा, because my passport gives me that option to write both the exams, and both of them, like, okay, this is just to say the SAT has a little bit more, it's a little easier to write the exam, and there are a lot less people who give the exam for SAT as entrance for IIM Indore. So because of that, मेरा chances उससे बढ़ गया. Okay. From where do I prepare for IPMAT? जो मैंने बैंगलोर में किया था वो कोचिंग, वहां से करी मैंने. तो I did not prepare from iQuanta. I got into it through Sanchit. Um, then Excuse me. Like, yeah, hello. Excuse me. yeah. Actually, I am a non-math student. Right now, I'm in 12th, and I am really very weak in maths. Then what should I do? If you're really very weak in math, what you should do is right now focus on the numerical sort of questions that are there. Kyunki if you're leave trigonometry for the last portion, leave the very tough concepts for the last portion. First, you concentrate on whatever occurs the most. If you concentrate on whatever kind of concept occurs the most, then there is the chance of you getting those questions correct increases in the actual exam. Okay. Okay. Okay, or like someone commented कि don't take mock test in the last 20 days. I would say, like, first of all, आइडिया तो होना चाहिए लाइक कैसा एग्जाम है. मैंने इसलिए बोला कि इफ यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, लाइक यू शुड हैव बेसिक आइडिया कि एग्जाम में क्या आएगा, एंड दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग कि मॉक टेस्ट देना चाहिए. एंड you can start building concepts like 20 days में it's not like impossible है, but फर्स्ट 10 days में कुछ ना कुछ तो मेरे को आइडिया लेना पड़ेगा कि मॉक एग्जाम में बेसिक आइडिया क्या आएगा, एग्जाम में क्या आएगा. एंड दैट इज व्हाई आई वाज सजेस्टिंग कि इसलिए मॉक टेस्ट देना चाहिए. देन कॉन्सेप्ट साथ में डेली करना पड़ेगा, लाइक जो मैंने बोला अल्फामेटिक का पार्ट, जो एल्जेब्रा का पार्ट वो आता है, लाइक इन द नेक्स्ट 20 days भी करना पड़ेगा. लाइक लास्ट के 10 days में व्हाट यू कैन डू इज कि पहले मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि मेरे फॉर्मूलेज क्या है, मेरे अल्फामेटिक के फॉर्मूलेज क्या है, मेरे लड़की तो हर एक बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस के फॉर्मूलेज क्या है मैं वो रिवाइज कर रहा हूँ. सो दैट विल बी द स्ट्रेटजी फॉर 2024. Sanjana, I am from Bangalore. Where did you do this coaching from Bangalore, please? So I went to Career Launcher in Indranagar. So the one thing that I can say is the classes of Career Launcher are, though the math classes are not that great most of the time. It is more of the English classes that were good. And for when you're preparing for Rohtak, there was that other section that was there. I forgot the name just now. So that Logical reasoning. logical reasoning. The logical reasoning section, whatever they thought over there was really good. So what the best part of Career Launcher was their mocks. If you join the IPMAT preparation, the 2-year preparation, then they'll give you mocks for IPMAT Indore, for Rohtak, for JIPMAT, for Symbiosis, for Christ University, they'll give you separately. So it is very their mocks were extremely helpful. But I think whatever you're doing right now with probably with iQuanta, or I think that's the name, wo to I think should be more than enough. Yeah. So moving on to
what are the questions in the which coaching is better, online or offline? So, like, can you just repeat yourself? Yeah, The students mostly here are doing online, I feel. So yeah, मैं उसके बारे में just बोल ही रहा था. So, right. Okay. So, like, moving on to कि कौन सा coaching best होता है? Like, from my locality, मैंने online coaching ली थी. And I purchased iQuanta mock test and study materials. Like मेरे को like external coaching से और external चीजें करनी थी, तो इसलिए मैंने purchase किया. तो इसलिए like मैंने इधर से परचेज किया था. I would say online is the best thing you can do because you know offline में मेरा टाइम वेस्ट होता था कि मैं किसी और जगह पे अपना like पेट्रोल भी वेस्ट हो रहा है, फ्यूल भी वेस्ट हो रहा है, कहीं और जाना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो हर चीज वेस्ट हो रही है. एंड दैट इज उस टाइम को सेव करके मैं अपना ऑनलाइन पढ़ सकता हूँ. तो आई वुड rather suggest कि ऑनलाइन पढ़ करो. And same goes for everything. And And how also was like your yeah. maths? So How was your maths? Like average student or a good math student? uh, telling about math, Sanchit like is a very good math student. I'm telling you this from uh, whatever I've seen in class. He's a very, very good math student. I'm on the other hand very, very, very mediocre. So I'm telling you, if you just practice your math, you'll be able to get do it. The iQuanta, I've seen the course and I've seen whatever mock tests and everything they have. It is genuinely, it will help you a lot. Okay, Like okay. Thank I you so wish much. ki I had wo wali prep at that time. Okay, okay. yeah, Thank you. sorry to interrupt, but I asked the question for offline and online coaching. Actually, there is a coaching in my locality, which is matlab it's for weekends classes, Saturday and Sunday. So should I go for that class because their teachers are more experienced and I want a teachers on the basis of years of experience, or should I go for I want a online class? I think the ball lies in your court. मतलब तुम्हारे हाथ में डिसीजन है. Because what I think कि ऑनलाइन इज बेस्ट बिकॉज ऑफलाइन में टाइम वेस्ट होता है. इसलिए लाइक मैं ऑफलाइन ट्रैवल में करो बहुत इसलिए. टाइम वेस्ट होता है, मैं तो बताती हूँ, इसलिए मैं ऑफलाइन ये में बहुत सजेस्ट टाइम करूँ वेस्ट. कि ऑनलाइन कोचिंग बेटर है उससे. एंड बहुत ऑनलाइन टाइम सेव कोचिंग होता इज है उससे. वेरी वेरी शार्प एंड क्रिस्प. जब जा रहे हो तो जा रहे हो. यू डोंट हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस, यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम इन ट्रैवलिंग. मैं बैंगलोर से थी तो मेरा आधा घंटा ट्रैवलिंग में होता था हर हर संडे. तो मैं 4 घंटे वहां कोचिंग में थी और 1 घंटे ट्रैवल की टाइम में. तो मेरा लाइक इट वाज अ ginormous टाइम वेस्ट मेरे लिए. तो the time that I spent in class, I could have spent doing my mocks. So do online. I mean, like in my opinion, do online. क्योंकि online में you join, you learn the concepts, you leave, you do the practice, you'll get easy accessibility to your teachers, you'll get easy accessibility to your packets, and it's way better. ओके सो लाइक चैट में तो और क्वेश्चंस आ रहे हैं. हाँ, आई डोंट नो अबाउट दैट कोचिंग फीस, तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता. इंदौर की डीआई नहीं बन रहा है. ओके. डीआई पिछले साल तो लाइक 5 क्वेश्चन आए थे. दैट वाज ऑन बेसिक लॉजिकल रीजनिंग. तो डीआई के लिए गोज ऑन की तुम पहले परसेंटेजेस वाले पार्ट से वो कितना स्ट्रॉन्ग कर पाते हो. आई थिंक जो अर्थमेटिक का परसेंटेजेस वाला पार्ट है उसको कितनी जल्दी से सॉल्व करेंगे बिकॉज डीआई इज नॉर्मल ग्राफ वाले क्वेश्चन आता है. सेम गोज फॉर जो आई एम रोहतक में क्वेश्चन आए थे उसके पेपर में. एंड डीआई के लिए बेस्ट ही अगर आपका परसेंटेज वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है देन वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा. आई थिंक डीआई के लिए वो एनफ रहता है. और इंदौर में सिर्फ 5 क्वेश्चन आते हैं हर साल. तो इट इट डिपेंड्स ऑन यू क्योंकि मेरे टाइम पे थोड़े लंबे क्वेश्चन आए थे सो आई स्किप्ड दोस क्वेश्चन. एंड ओके सो लाइक स्ट्रैटेजी फॉर 2026. आई गेस तुम्हारे पास बहुत टाइम है. तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम की बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. प्रेशराइज प्रेशर मत लो इतना बिकॉज 2026 में 2 साल है लगभग अभी. तो
इसमें कुछ ऐसा प्रेशर नहीं लेना है, बट नॉर्मली पढ़ते जाना है। ओके। Okay, so where should we practice concept of finishing questions of iQuanta dashboard? Okay. Cons के लिए I would say अरुण शर्मा, आई डोंट थिंक, लाइक यूट्यूब से चैनल है, लाइक वो मैं सजेस्ट करता हूँ, लाइक उसका मैं नाम डाल देता हूँ, एंड आई गेस वो हेल्प करेगा थोड़ा। उसकी लाइक प्लेलिस्ट आई वुड से बहुत अच्छी लगी थी मुझे, दैट अ कैट चैनल, लाइक कैट के क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं उसे। तो आई गेस वो देखोगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। मैं उसको लाइक चैट बॉक्स में टाइप कर देता हूँ ऑल्सो। या और लाइक क्वेश्चन कौन से हैं for every math student, what should we focus on the topics in which we are good at, or we should try learning new concepts. So, like, as a average math student, I'm assuming कि arithmetic simple होगा तुम्हारे लिए compared to algebra and other sort of those questions. So, I guess संजना को अच्छे से बता सकती थी। कि uh, कैसे करना है? yeah, about if you are an average math student, should you focus on learning new concepts, or कि जितना मैं अच्छा हूँ पहले से वो करना It depends upon how close your exam is. If your exam is very, very close, then don't learn new concepts, you'll stress yourself out. So you do the concepts that you already know, try to make sure that the probability of you getting it wrong is like zero. And agar time hai, so you can learn new concepts and you can try and work on those concepts even if the concepts are mediocre and you have like around a 75% chance or 75% accuracy. It is good enough. Yeah, I saw a question is iQuanta good for IPMAT? Yes, the quant quant section especially is very good if you're a mediocre student, math student. So yeah, it will work really well. Also, like external books क्या suggest करनी चाहिए? I would say कि study material is enough. Word Palm EDC is one of the external books जो solve कर सकते हो. If you are struggling in RT section, तो मैंने जो करी थी, that was अजय सिंह जो like reading comprehension for competitive exam के लिए है, वो solve करा था, and then I went on to कि मेरे mock test में फिर से कम score आ रहे थे वो में, तो मैंने अरुण शर्मा भी कुछ उसमें से पार्ट सॉल्व करना शुरू कर दिया था। I would say Arvind Sharma abhi mat purchase karo if you're preparing for 1 year examination or 2 years, because वो बहुत heavy book है। So first of all, complete all of your verbal का study material at least 5 times, at least 3 to 4 times revision of at least I would say RC के जो भी study materials हैं उसका like 2 to 3 times का revision, vocabulary का स्पेशली vocabulary grammar section का 4 to 5 times। तो आई विल से एक साल में अगर इतना रिवीजन हो रहा है, देन आई डोंट थिंक कोई एक्सटर्नल बुक की जरूरत पड़ेगी। ऑल्सो ओके, सो आई थिंक इन क्लास आई एम अ क्लास 12 स्टूडेंट, और लाइक मुझे कैसे मैनेज करना चाहिए, लाइक व्हाट माय डे इज इन क्लास 12 की मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरी जो ओके या सो मैं क्लास 12 में लाइक डेली स्कूल जो मैं अटेंड करता हूँ, आई हैव मैं ऐसे टारगेट लेता कि इस वीक मेरे को इन इन टॉपिक्स का रिवाइज करना है, शीट सॉल्व करना है, जो भी है। तो मैं जब भी स्कूल जा रहा हूँ, आई वुड सॉल्व दो शीट जब भी मेरे पास फ्री पीरियड है, जब भी लाइक एटलीस्ट मैंने गेम्स पीरियड भी कभी कभी सेक्रीफाइस कर है अपना इसको सॉल्व करने के लिए, एंड तो मैं स्कूल में ही जाके सॉल्व करता था। और ऐसा टाइम टेबल रहता था कि सुबह मैं सिर्फ बोर्ड्स का पढ़ रहा हूँ, बोर्ड्स के लिए क्लास 12 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, बिकॉज वो लाइक हो जाएगा जल्दी, जैसे शुरू के सुबह के स्लॉट में। तो योर डे इज डिवाइडेड इन 3 to 4 स्लॉट, जिस दिन भी हॉलीडे है। तो शुरू के लाइक 3 to 4 आवर्स मॉर्निंग के, जितने बजे भी उठ रहे हो, 9 से 12, लाइक ये 3 घंटे में बोर्ड्स का रिवाइज हो गया। देन जो मेरा पूरा दिन बच रहा है, आई हैव कि यहाँ पे मैं अपना आईपी मैट का जो भी मेरे को पढ़ना है वो मैं पढ़ लूंगा ऐसे वर्बल का।
तो आई थिंक डिवाइड योर डे इनटू 3 to 4 स्लॉट की, जहाँ पे मेरा लाइक स्कूल है, तो स्कूल में मैं सिर्फ अपना बोर्ड का प्रिपेयर कर रहा हूँ या फिर मैं आईपीमेट का प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो एनालाइज 3 to 4 स्लॉट जिसमें मैं रोज पढ़ पा रहा हूँ। सेकंड थिंग इज कि इट रिक्वायर्स कि 800 आवर्स या 700 कुछ तो इतना पढ़ा हो कि आईपीमेट के लिए, तो लाइक 1 ईयर में इतना मैंने पढ़ा हो, तो देन आई कैन इजिली क्रैक दैट एग्जाम। तो लाइक यही चीज थी। What should be the daily achievable goal for to crack IPMAT? डेली अचीवेबल गोल से नहीं, बट वीकली गोल पे फोकस करो कि एक वीक में मेरे 3 to 4 टॉपिक या जो भी है वो रिवाइज हो पा रहे हैं, बिकॉज डेली गोल्स को पूरा कर पाना समटाइम्स इट्स प्रीटी टफ, बट डेली गोल्स में यू कैन डू व्हाट यू कैन डू इज कि आज मेरे को 10 to 20 30 वर्ड्स, जो भी मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नॉट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट जो भी मैंने द हिंदू से आर्टिकल पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ा, तो मैं उसमें से जो भी नए वर्ड मिल रहे हैं, जो भी नए फ्रेजल वर्ड्स इडियम्स मिल रहे हैं, मैं 30 to 40 या 20 to 30 इतने वर्ड नोट डाउन करूंगा। सेकंड थिंग, रोज एक सेशन वर्ड फार्म ईडीसी का पढ़ूंगा। तो आई थिंक डेली अचीवेबल टारगेट यू कैन इंक्लूड दीज थिंग्स। बाकी और अलग से कॉन्स के लिए आई थिंक वो वीकली अचीवेबल टारगेट होना चाहिए कि डेली मैं फॉर वर्बल सॉल्व 3 to 4 आवर्स, 2 3 आवर्स, ग्रामर के लिए सॉल्व 10 to 8%, मतलब ऐसा कि बहुत छोटे छोटे स्लॉट्स में यू हैव टेकन अ वीक वीक टारगेट कि मेरे को एक वीक में इतनी इतनी चीजें करनी है, देन यू हैव डिवाइडेड इन द कि मेरे को एक एक दिन में 10 20 चीजें, 10 20 क्वेश्चन सॉल्व करना, ऐसा ऐसा वो लाइक खुद से फिगर आउट हो जाता है। तो आई वुड से कि वो हो जाएगा प्रिपेयर करते करते। Offline coaching is 5 minutes away. Should I join because fees is 3 times more than iQuanta? I think yeah, Sanjana has already answered that. How much did you score in your class 12? Okay, like Mira, it was pretty decent, like 94.6 percentage. Yeah, only it matters. Okay, like एक 2024 के लिए I started my preparation 15 days before and have completed 42 45% of syllabus. Please tell that there is any chance for me to clear IPMAT Indore. Yes, there is 100%. Like चांस तो बहुत अच्छा है 100%, बिकॉज अगर यू हैव completed 40 to 45% of the syllabus, नेक्स्ट 15 days में आई विल से एक झूठी होप नहीं दूंगा, बट डेफिनेटली हो जाएगा। एक, Sanchit, only या 12 minutes are left. I wanted to say कि there are some international students here, right? I wanted to, like, everyone knows कि how to do for the national students, what is the application procedure. अभी international students के लिए I'm not sure whether or not they've submitted their packet or whether they're going to next year. So I'll just take 5 minutes and I'll talk about that. if someone Uh, has answered question you can. no, someone asked something about international. I don't remember where, but I just um wanted to say that Bhaiya also said ki we should do now. Should tell about how the international students goes. Okay, so international students ke liye, this is only for people who do not have an Indian passport. By not having an Indian passport, you do not have Indian citizenship. Okay, you either are an NRI or an OCI, or there is no association with India. You have an association with another country. Okay. This is the first thing. This is the first requirement. Then the second requirement is that once you are an international student, you will be eligible to write both IPMAT and SAT. Now, I recommend going for SAT because this is how I thought of it. So, out of 200 people, five people will be selected. And out of 20,000 or 30,000 people, 150 will be selected. The chances of you getting in through the SAT route is much easier. Okay. And the only difference between the SAT route and the IPMAT route is the exam. Otherwise, And the also like interviews are all the same. Like they happen at the same time. So the whoever was an international student and whoever was a national student, both of them, they had interviews at the same time.
and those who were taking the interviews were all IIM Indore professors. Oh, yeah. So same goes for interview. Like some questions are for like कि please tell about PI round. Okay. So PI के लिए basically like first of all एग्जाम के ये पहले एग्जाम निकालना पड़ेगा 10 PIU का. So my PI round was कि उनने like first of all मेरे से कुछ कॉमर्स के क्वेश्चन पूछ लिए कि like it was basic कॉमर्स क्वेश्चन कि ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है. बट उनने इसको कलेक्ट तरीके से पूछा दैट इज कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है. सो वर्ल्ड ट्रेड WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. तो वर्ल्ड कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं है. तो इट वाज लाइक बेसिक चीज थी ट्रेड एंड कॉमर्स के बीच में. सो इट्स लाइक वो ऐसे क्वेश्चन पूछता है. देन कुछ मैथ के ऊपर लाइक मेरा मैथ था तो कोर मैथ था. देन उसके ऊपर क्वेश्चन आते थे. एंड सेम गोज फॉर कि फिर उन्होंने मेरे से लाइक अपनी पर्सनल हॉबीज के बारे में पूछा था कि व्हाट तुम्हारी इंटरेस्ट क्या है. सो आई सेड अबाउट की जियो पॉलिटिक्स में मेरे को लाइक ज्यादा इंटरेस्ट है. तो उन्होंने उसके ऊपर मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया था. तो दैट वाज माय पीआई राउंड. लाइक संजना तेरा कैसा पीआई राउंड था. तो मेरा पीआई राउंड उन उसका प्रेप तो संचित से अलग था. I sat and I made an introduction. Or introduction में I tried pushing. So basically the point of your introduction, if they ask you to do an introduction, is to guide the interview towards the direction that you can answer. So what I did was I did an introduction and I pushed a lot of my extracurricular activities, which I had a lot. So I had music as a very main theme in my introduction, and because of that, they asked me something about music. So although they asked me what are the achievements or what are the things conferred on MS Subalakshmi. So I was not able to answer that, okay, because I did not remember, not I something at that point of time I was not able to answer that. Because I was not able to answer that, the best thing that I did was outright tell them to their face, I'm sorry, I do not remember. I will check and I will check later on. Something along those lines. अगर तूने बताया वो, तो वे देखेंगे कि you are willing to learn. Even if you don't know, you are willing to learn. And then it switched to my academics वाली section. So academics में first they thoda asked me definition. So in this also, I made sure to gear the conversation away for subjects that I was not too sure about. So the subjects that I was very sure about was economics and math. Okay. And they asked me the question, what are the subjects that you like? So at this point of time, I did not tell them fully ki I like economics, I like math, because they can ask me anything from that. What I did was I said I like a few topics in math and I like a few topics in economics. So they will ask me what these few topics are. When they ask me what these few topics are, I of course could say something that I obviously knew properly. So the point of the way you prepare for the interview, and I saw lots of YouTube videos and all of that, the way you prepare for the interview is the way you try to guide the interview in the direction that you know you can answer confidently. तो उसके बाद मेरा फटाफट ऐसे हो गया. economics के क्वेश्चन पूछे, they didn't ask for it, but then I started giving example. वो 9th grade की NCERT economics textbook से वो सब मैंने किया. और उसके बाद maths के जो questions आए थे, the sir who was asking me did not know कि applied math और core math की क्या difference थे. So he asked me core math questions. Again, when he asks you questions that you don't know, you say, sir, मुझे ये सब नहीं, like first you say मुझे ये नहीं पता, or like I do not know this, but I'm willing to learn about this later. Do not keep repeating this I am willing to learn about this later statement multiple times in the interview. Otherwise they will be like ये तो ऐसे ही कह रही है, ये कुछ नहीं करवाएगी. तो the
when he asked me like expansion of E power X, and I never learned that in applied math. I said, sir, this was not a part of my applied math portions. Applied math does not involve these core math concepts. And then he asked me questions ki skewness kya hai, ek normal curve. So in applied math, we had like normal distribution curve, t distribution and all of that. And he asked, okay, एक normal curve को दिखा, ये इसका mean median mode दिखा, इसका जो skewness वो भी दिखा. So these are, you can guide the questions towards what you want. Yeah, that's all about the interview. Okay, so like that's all about the interview की. हाँ, so like interview की preparation just begins कि तुमने एग्जाम पहले क्रैक कर लिया, देन मेल आ गया, तो देन ओनली लाइक उसके बारे में सोचेंगे. लाइक समवन वाज आस्किंग अबाउट कि तुम्हारी प्रोफाइल कैसे होनी चाहिए इन क्लास 11. आई डोंट थिंक यार, बिकॉज तुम अपना इंटरेस्ट फाइंड करो. मेरे को किस चीज में मजा आता है, लाइक मेरे को न्यूज पढ़ने में मजा आता है, मेरे को कुछ नया जानने में मजा आता है. If किसी का इंटरेस्ट होगा कि मेरे को कोडिंग करने में मजा आता है, तो वो उनको कुछ ऐसा नहीं चाहिए कि तुम भाई अलग ही कोई यूपीएससी निकालो, प्रीलिम्स निकाल के बैठो हाँ क्लास हाँ, 12 वो में. सब ऐसा कुछ नहीं, अचीवमेंट नहीं चाहिए उनको. दे डोंट वांट नहीं एनी एक्स्ट्रा चाहिए. करिकुलर. दे The वांट कि thing, तुम असल में हो क्या. दे वांट टू नो कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि एक्स्ट्रा करिकुलर इधर पे बहुत अच्छे से तुमको करवा देंगे. तो यही मेन चीज है, लाइक हाँ. वो एक्स्ट्रा करिकुलर का कुछ एम्फेसिस नहीं है. व्हाट दे डोंट व्हाट ओके सो इंदौर, रोहतक और वो रिमेनिंग आईआईएम्स का जो डिफरेंस है कि इंदौर concentrates on your academics a lot. कि if you get your concepts, if you are able to answer your concepts interview में, they are very very happy. और तेरा even if your board exam grades are like 80%, 70%, it is okay. They are fine with that as long as your quant ka this one foundation is very, your topics ka foundation, 11th and 12th topics ka foundation is very very strong. The Rohtak has a lot of emphasis on extracurriculars. So अगर तेरे पास बहुत सारे extracurriculars हैं, तो Rohtak का एग्जाम लेना it's good to take. You might actually get in. Or the other IIMs have a mixture of both. तो मेरा तो बहुत extensive extracurricular था, but lots of people in our batch do not have it. So it doesn't matter. It genuinely doesn't matter. They do not like people who boast about themselves. They do not like people who show themselves as very very egoistic. So even if you do not have much, बहुत ठीक है. It's okay. Oh, yeah, I think there are not that much questions left. सेल्फ स्टडी से भी आई विल से क्रैक हो सकता है. लाइक वॉच यूट्यूब चैनल्स, लाइक कुछ दो तीन यूट्यूब चैनल्स है कॉन्स के लिए, आई विल से उससे हो जाएगा. द फर्स्ट वन मतलब लाइक बहुत सारे सेल्फ स्टडी से भी हो जाएगा, बट रेदर देन मेरे को एक गाइडेंस चाहिए होती है. मतलब मैं भी सोच रहा था क्लास लेवल में कि मैं कुछ ये बुक्स कवर कर लूंगा अरुण शर्मा से एंड मेरा क्रैक हो जाएगा. बट व्हाट आई रियलाइज कि यार बहुत क्लटर्ड है ये सारी चीजें, लाइक बहुत बिखरी हुई सी है, अरेंज नहीं एकदम. तो दैट्स व्हाई मैं कोचिंग ज्वाइन करा एंड देन मॉक टेस्ट प्रॉपर मिले, तो इट्स लाइक तभी लाइक मेरे को समझ में आया था कि हाँ अब क्या करना है. तो प्रॉपर गाइडेंस जरूरी होता है. सेल्फ स्टडी में वो नहीं मिल पाएगा. सेल्फ स्टडी में यू विल गेट टाइम, बट प्रॉपर गाइडेंस तो नहीं मिल पाएगा. तो आई थिंक उसका ये डिसएडवांटेज होता है. जो संचित एंड बता रहा है दैट्स वो व्हाट. बहुत सही है. It's very important. ऑल्सो भाई आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है प्लेसमेंट. देखिए प्लेसमेंट को आई एम नॉट कंसर्न अबाउट. देखो प्लेसमेंट मैं कंसर्न नहीं हूँ. मेरे को जस्ट लर्निंग्स लेना है इधर से क्या क्या है. इवन इफ आई एम गेटिंग प्लेसमेंट ऑफ 20 LPA 10 LPA, बट मेरे को जो लर्निंग्स मिलेंगी इधर पे, दैट इज आई एम कंसर्न अबाउट कि हाँ इतने अच्छे प्रोफेसर्स हैं, उनसे मेरे को सीखने को मिल रहा है. दैट इज आई एम कंसर्न अबाउट. तो आई थिंक एट द एंड लर्निंग मैटर करती है, नॉट योर प्लेसमेंट. एंड प्लेसमेंट का कोई ऐसा सीन भी नहीं है. लाइक मिनिमम से मिनिमम भी कितना जाता है, मैक्सिमम से मिनिमम यू ऑल नो दैट सारे ऑनलाइन मिल जाएंगे. इसलिए हाउ टू क्रैक इंग्लिश कट ऑफ इन IPMAT, इस पे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं. लाइक ABC अप्रोच फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकंड है कि यू शुड बी लाइक, क्योंकि हर साल आए वर्बल का कट ऑफ ज्यादा जा रहा है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ABC अप्रोच. सेकंड इज कि
as I've already said, the vocabulary section ke liye you would go for WPMA. All the materials that I've already said in the video, you can watch it on YouTube. Okay. I'm not math student. We have already discussed that this earlier. So, and like uh, अब जो like someone was talking about the life, how is life in and और I think मतलब जिसका मेरे को इंतजार था like वो सच में सच हो गया इधर पे आके because I wondered कि like how will I will crack IPMAT okay like मैं भी scroll करता था कि वो fast ऐसा हो रहा है वो इधर पे like इतनी तरह की चीजें हो रही है बट मेरे को हमेशा ही लगता था कि मॉक टेस्ट में सिर्फ 170 160 या बहुत कम स्कोर आ रहे कभी कभी इवन 130 120 तो मैं कैसे आऊंगा इधर पे एट द एंड थिंग्स डेफिनेटली टर्न आउट फॉर मी एंड इसकी वजह से मैं आया तो दैट वाज डेफिनेटली वर्थ इट क्योंकि यू विल गेट टू नो अ लॉट मेनी थिंग्स इधर पे लाइक वो जो डीयू में भी सीखने को नहीं मिलेगा वो इधर पे मिलेगा एंड दैट इज हाउ लाइफ हियर और या हॉस्टल में एसी और टॉयलेट नहीं है एनीथिंग अबाउट फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम इन इंदौर या वो हमारे यहाँ थर्ड ईयर में होता है फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम है वही होता है लाइक my academics is very weak so after written exam is over should I learn academics for 11th 12th for interview no I don't think so because जितना तुमने अगर तैयारी के लाइक जितना तुमने प्रैक्टिस के टाइम पे करा है आई थिंक दैट विल बी एनफ क्योंकि वो जानते हैं ना तुम्हारा एकेडमिक्स वीक है मैथ्स में तो कुछ ही चीजें लाइक वो इंटरव्यू में तुम अपना क्लास 12 क्लास 11 का रिवाइज करोगे तो डेफिनेटली वो चीज रिवाइज हो जाएगी क्योंकि वो उस पर क्वेश्चन पूछेंगे लाइक मेरा भी मैथ्स कोर्स था बट उनने मेरे से लॉगरिथम्स की क्वेश्चन पूछे जो आईपीमैट के सिलेबस में ऑलरेडी है तो अगर मैंने वो उस टाइम कर रखा है तो उसकी वजह से मेरा ये भी हो गया था पूरा ऐसा स्पेसिफिक नहीं पूछे थे मेरे से मैथ्स कोर्स के क्वेश्चन आई एम गेटिंग एंक्सियस रियली सो एनी टिप्स फॉर इंटरव्यू Um, tips for interview, as we have already discussed it, Oh, interview में one कैसे tip for questions आते हैं. interview Yeah. should be you sit in front of the mirror and you speak. Then you'll be able to हाँ observe how you speak, and then you'll be able to correct any. Okay, if my hand is snapping like this while I'm talking, then that's very, very distracting. So then, if I see myself in the mirror, I'll be able to say, okay, ये stop करना है ऐसे. या लाइक सेम गोज फॉर की मिरर के सामने लाइक मैं क्या करता था बिफोर द इंटरव्यू मैं जस्ट लाइक ऑनलाइन था तो मैं जस्ट अपने कैमरे के मोबाइल का कैमरा ऑन किया कुछ भी एक टॉपिक पे लाइक मैंने आई एम रोहतक के लिए ऐसे प्रिपेयर करा था कुछ भी एक टॉपिक पे एक्सटेम्पर देना होता है कि वो टॉपिक ऐसे रैंडम दे देंगे कि सोशल मीडिया अब इसके ऊपर एक मिनट तक बोलो तो मैं इसी को करता था कि 1 मिनट तक मैं कैसे फ्लुएंटली बोल पा रहा हूँ बिकॉज दे वांट कि बंदा कॉन्फिडेंट होना चाहिए जो चीज बोल रहा हो दे ऑल्सो नोटिस दैट बट आई थिंक दे व्हाट मैटर्स हियर इज कि तुम्हारी स्पीड कितनी है तुम्हारी वर्ड पर सेकंड लाइक तुम कॉन्फिडेंट हो कि नहीं एट द एंड वो वो चेक करना चाहता है कोई भी चीज को बोलते हुए एंड इट्स लाइक कि मोबाइल कैमरा ऑन करो मोबाइल के सामने कुछ भी बोलो प्रैक्टिस करो कि हाँ मेरा कॉमर्स का कॉन्सेप्ट है कोई भी कि रेपो रेट ऐसा क्यों होता है व्हाट इज रेपो रेट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बस 1 मिनट में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ऐसे प्रैक्टिस करो ऐसा Uh, इंटरव्यू के लिए whoever asks for the fee structure is given on the IIM Indore website. Okay. And then जो बोला कि भैया आपने ऑनलाइन इंटरव्यू में चीटिंग करने की कोशिश नहीं की, नहीं दिखता है वीडियो कैमरा में कि चीटिंग कर रहे हो, बिल्कुल दिखता है, तो चीटिंग मत कर. ओ या लाइक चीटिंग तो वो मतलब हो भी नहीं पाएगा वो इतनी जल्दी इंटरव्यू खत्म हो जाएगा मेरा 10 मिनट्स में हो गया था ओवर तो मेरा तो 25 minutes plus था. I had a wait of 1 hour and I was very very nervous. और उसके बाद वो 1 hour में मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये इतने टाइम क्यों ले रहे हैं. उसके बाद मैं नर्वसनेस वेंट एंड मेरा इंटरव्यू 25 minutes प्लस का था. या लाइक इंटरव्यू का तो हमारा भी सेम ही है ऐसे ही ज्यादा था लाइक इंटरव्यू में बट वी हैव टू लाइक कोई पूछा था कि मेरे को रोज में कितना टाइम देना चाहिए फॉर 12 रीडर्स के तो एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन वही सेम चीज है कि कितना
लाइक 12th में होके मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आज बढ़ाते जाऊंगा। आज मैंने 12th का कवर करा, तो मैं एज अ टाइम टेबल बताता हूँ कि तुम्हारा टाइम टेबल एटलीस्ट क्या रहेगा। अभी समर वेकेशन आ रहे हैं, तो यू हैव एनफ टाइम कि मैं कुछ कॉन्सेप्ट अपने अभी ही कवर कर लूँ। तो दैट इज वाई आई एम थिंक कि जितना टाइम तुम कोचिंग में चाहते हो फॉर कॉमर्स एंड मैथ, ऐसा कि 3 घंटे में मान के चलता हूँ कि तुम्हारा कोचिंग में चाहता है ऑफलाइन कोचिंग 8 घंटे स्लीप, ठीक है, 8 + 3 11। अब टाइम कितना बच रहा है, जैसे 13 आवर्स, उसमें से अब तुम कभी कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है, वो भी चलता है। इसमें से लाइक एटलीस्ट मैं 5 to 6 आवर्स तो समर वेकेशन में डेडिकेट कर सकता हूँ इसकी प्रिपरेशन के लिए। एंड दैट्स व्हाट आई वांट टू से कि 5 to 6 आवर्स समर वेकेशन में करना चाहिए धीरे धीरे। कि हाँ, आज 5 मिनट ज्यादा पढ़ा, आज 10 मिनट ज्यादा पढ़ा, आधा घंटा ज्यादा पढ़ा, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके टाइम वो खुद ब खुद मैनेज हो जाएगा। एट द टाइम ऑफ स्कूल, स्कूल का मैंने वैसे ही मैं क्या करता था, तो मैंने पहले वीडियो में बता दिया कि लाइक प्लॉट्स में डिवाइड कर लिया, स्कूल में जाके आईपीएमएट की कुछ मटेरियल सॉल्व कर लिया, कुछ भी ऐसा सॉल्व कर लिया, एंड देन बोर्ड के लिए भी पढ़ लिया उधर पे कोचिंग में जाके। तो ऐसा है कि बैकलॉग्स मत रखो बिल्कुल भी, हम्म, आई वुड से मेरा बैकलॉग्स एक्सपीरियंस बिल्कुल बहुत भी मत रखो। बहुत अलग सा था। आई स्कूल में तो मैं लाइक आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ फन वाला थिंग, फन वाला काम। मेरा स्कूल में बहुत सारा काम काम था, और मैं स्टूडेंट काउंसिल में थी, उसका काम था, और इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना था, वो सब था। और जब मैं घर आई थी, 2-3 4 घंटे के लिए ये स्कूल की काम कर रही थी, वो उसकी पढ़ाई कर रही थी। उसके बाद ना, जब वो उसके बाद जब टाइम मिली, तो तब मैंने आईपीमैट की प्रेपरेशन शुरू की। इसलिए मेरा और संचित का मार्क्स डिफरेंस तो इतना और इतना है। तो यार लाइक वो तो मतलब लाइक हाँ, उससे लाइक वो लाइक डिपेंड करता है, क्योंकि किसी का आईक्यू लेवल पहले से ही बहुत अच्छा होता है, तो दे आर एबल टू कि मैं कम प्रिपरेशन में भी करके चला जाऊंगा। एंड लाइक मेरा आई डोंट थिंक सो कि मेरा आईक्यू लेवल कंपेयर टू कि पिछले क्लास प्लीज 11th में कम प्लीज होगा। प्लीज 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 प्लीज, इतना मत, इतना मत। ही इज वेरी ओके स्मार्ट ओके। यार। मैं उसके पास में ही बैठती हूँ, बहुत स्मार्ट है क्लास में। डोंट वरी। इवन इफ यू आर an ordinary student, okay, you can still come to IIM Indore, is what I'm saying। कि मैं बहुत ordinary student हूँ, मेरा बोर्ड्स में सिर्फ 92% ही आए थे, बहुत ordinary है। डोंट वरी, जब यहाँ आए तो इट विल बी फाइन, यू विल फील लाइक ओके, मैं इतना ऑर्डिनरी हूँ, इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है यहाँ, मैं क्या कर रही हूँ इधर। डोंट वरी, इफ यू ज्वाइन, यू आर ज्वाइनिंग फॉर अ रीजन। या लाइक सेम है, बिकॉज यहाँ पे भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ऐसा है कि कोई बहुत अच्छा था पहले पढ़ाई में, देन वो डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो ही इज लाइक ही परफॉर्मिंग पुअर इन एकेडमिक्स, तो बहुत डेविएशन हो जाता है। इट डजंट डिपेंड ऑन कि तुम पहले कैसे थे। ऑल्सो विल आई बी एबल टू क्रैक इफ आई स्टार्ट नाउ, कर सकते हो इफ यू आर एबल टू कवर लिटिल बिट कॉन्सेप्ट, तो लाइक मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो मैंने बोले कॉन्स में, probability, PNC, algebra, if you are like covering basics of all these things, so you will be able to score decent marks in the cons section। वर्बल का भी like प्रिपरेशन तो मॉक टेस्ट से अच्छा रहेगा, वर्बल का है तो कि उससे ज्यादा करिए तो फिर ठीक रहेगा। हाउ टू कंप्लीट अ चैप्टर इन कॉन्सेप्ट नॉन मैथ स्टूडेंट, ओके, लाइक नॉन मैथ का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं देख सकता हूँ। बाकी तुक्का मेथड विल नॉट वर्क इन आईपीएमएट, नेगेटिव मार्किंग है बहुत ज्यादा। ओके, तो आई थिंक वी आर प्रीटी डन विद ऑल ऑफ दी क्वेश्चंस। संचित, वो तो लास्ट वाला क्वेश्चन जो आईक्वांटा के पे डाउट सॉल्व किस तरह होते हैं, वो आंसर कर, उसके बाद खत्म देयर कर। विल बी मेंटर्स फॉर यू, वो लोग सॉल्व करेंगे। एंड लाइक यूट्यूब चैनल फॉर कॉन्ट एंड बुक्स फॉर कॉन्ट, ओके, बुक्स फॉर कॉन्ट आई थिंक वो इतना सजेस्ट तो मैं नहीं करूंगा, स्टडी मटेरियल तो है ना। यूट्यूब चैनल आई थिंक आई इज बेस्ट फॉर इट, बट अगर मेरे को और ज्यादा जानना है
I would go for CAT के जो भी channels हैं, and CAT के channels में you will get a lot of playlists. उसमें से I would say बहुत सारी कोचिंग्स पढ़ाती है, तो उसमें से कोई सा भी देख लो, बिकॉज कैट के बहुत अच्छे चैनल्स होते हैं, तो आई गेस वो कैट सर्च करते ही आता था कैट फॉर्म्स, तो उससे आप जा सकते हैं. Dress tip for boys in interview, wear a formal suit अगर है, अगर नहीं है तो एक फॉर्मल शर्ट एटलीस्ट पहन लो, और बाल को काट के ऐसे मूंछ को मत डाल, so it should be fine. या I think we can wrap it up, Sanchit. आई थिंक या वी कैन. आर देयर एनी मोर क्वेश्चंस? Can you repeat about Pond's topic? We should give more importance to. Okay. Algebra, arithmetic को छोड़ दो अभी के लिए फिलहाल, if you're preparing for 2024. तो चार मेन कॉन्सेप्ट, चार मेन टॉपिक्स है विच नंबर सिस्टम, एल्जेब्रा में खासकर पीएनसी, प्रोबेबिलिटी. इसमें बेसिक कट ऑफ जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन इसमें से आते हैं. नॉन मैथ तो फोकस ऑन अर्थमेटिक. इफ यू हैव एनफ टाइम, फोकस ऑन all of the concepts, all of the topics with you. Oh, how to be motivated while preparing for 25. Okay, so I think जो मैंने जैसे स्टार्ट करा था, तो मैंने कहीं पे लाइन सुनी थी कि पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है. लाइक इफ यू हैव एम फॉर कि मैं हाई लेवल अचीव करना चाहता हूँ, दैट इज द ट्रू स्टार्ट जो तुम चाहते हो. तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लाइक पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है. संगना, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, लाइक How मोटिव to हाउ stay टू रिमेन motivated? मोटिवेटेड? So the reason why I stayed motivated was because I could come outside of Bangalore. So that was one of the main reasons why. And like बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ, जो क्लासमेट्स, प्रोफेसर, सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत स्मार्ट हैं. If you go into a smart crowd, you only learn. You just continue learning, you continue growing, and that's yeah, classroom is AC. ऐसे क्वेश्चन क्या होता है कि क्लासरूम इज एसी? क्लासरूम में एसी है, और हॉस्टल में एसी नहीं है, मेस में नहीं एसी नहीं है. डोंट वरी, सिर्फ मैथ में है, क्लासरूम दैट और इज कूलर, आई गेस वो कूलर का कूलर टेम्परेचर. कूलर एसी नहीं है यार. I'm not. ओके, सो लाइक when will a student get internship? लाइक जो प्रॉपर इंटर्नशिप होती है वो सेकेंड ईयर में होती है. अगर इधर का होगी लाइक बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा उसके बारे में. एंड लाइक आई थिंक we should wrap it up. Like Yeah, I should. I am not able to complete my syllabus also due to such that I'm mock test level and mock level is in master level. I think the speaker also so even looking at positions and going from the credit to an exam single aspect. Okay. What I think the, you could be having some backup options. Okay. So उसके लिए जाओ, या if you are willing to, because frustrated होना it's not like the thing कि जो भी करना चाहिए, because ठीक है यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट योर स्टेटस, बट जो तुम्हारे बैकअप ऑप्शंस होंगे, लाइक आई आई अज्यूम कि तुमने सीयूईटी का फॉर्म फिल करा होगा डेफिनेटली. CUET या एंड कुछ ना कुछ कॉलेज की फॉर्म. It's 2015. So वो okay, see, it's very very natural frustrated होने, but like what Sanchit is saying, if you're not able to give your full efforts to IPMAT, it is okay, because there are many people over here who have taken a gap year and come over here, or who have attended college in a different college and have come over here एक साल के बाद. तो ठीक है अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि यू गेट आउट ऑफ इट and you go for your second options if you can. If you can go for IPMAT, wonderful. If you can't, then you go for your second options. Second options के colleges में जा, एक साल वहां पढ़ ले,
और फिर से if you want IPMAT की एग्जाम दे. Also, like if you are not able to complete the syllabus, at the end, what you are preparing for कि ये तुम्हें CAT के लिए तैयार कर दिया. You have already completed the syllabus. ठीक है, like you are not able to complete the syllabus. ठीक है, जितना भी पढ़ा है, that will definitely work जब तुमने CAT एग्जाम दोगे. Because if you are in some like तुम्हारे बैकअप ऑप्शन वाले कॉलेज में हो, 3 साल के लिए एनरोल कर रहे हो, यू विल प्रिपेयर फॉर कैट किसी भी स्टेज पे करोगे, तो वहां पे वो हेल्प करेगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी लर्न दोस कॉन्सेप्ट, तो वो तुम्हें उन लोगों से आगे रख देगा. एंड दैट इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस. ठीक है, लाइक मैंने पढ़ा था कि एक भाई बंदे का आईपीएमएट नहीं हो पाया था. नाउ ही इज इन आई एम अहमदाबाद. तो दैट इज व्हाट दैट मेक्स द डिफरेंस, क्योंकि उसने अपने सीवी पे वर्क किया. चाहे उसका मीडिया का कॉलेज था, उसने अपनी सीवी पे वर्क किया. उसने लाइक इट गिव्स यू मोटिवेशन कि यार मेरे से ये नहीं हो पाया, देन यार अब कुछ तो करना है. कोई नहीं, मीडियोकर कॉलेज ले लिया, सीवी अच्छा किया, एकेडमिक्स अच्छा किया, देन कैट के लिए प्रिपेयर करा. बिकॉज अगर इधर पे मेहनत नहीं है तो कहीं ना कहीं मेहनत, और इधर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी. वी आर ऑल्सो वी विल लाइक सेम चीज यहाँ पे भी जाएगी कि आई डेंट कैट के लिए प्रिपरेशन करना है कोई भी मिला कॉलेज में. तो आई थिंक इसलिए आई वुड से ऐसा होप मत हो, फ्रस्ट्रेटेड मत हो बिल्कुल भी. दिस इज preparing you for the later part of your life. Okay. Uh, okay, so someone is saying to unmute. Can I I think maybe. yeah, like okay, Hello, okay, am I audible? yeah, Yeah. yeah. So I will be giving my attempt in this 2024, and I'm Yeah. really frustrated at this point. I have been studying since April. I got to know about IPMAT in February or January, and till then I was giving my boards. So but due to that, I couldn't focus on IPMAT. I can't give the most of my time, so I was completing my syllabus, like not attempting the mocks, only focusing on completing the topics. So after that, when the boards were finally over, I started to giving my mocks. Then algebra and number system, they are really vast, which took my lot of time. Even still, at this point, I'm doing like algebra and number system like daily on the daily basis. Still, I'm not getting the confidence to attempt the mocks. After seeing the questions, I get uh, like yeah, I get completely blank. Can I get some idea like how to get the courage to at least attempt the mocks? I can't believe on myself. I know I have that level of maturity. Also, at least 75% I have done my preparations, but still I'm not able to gain that courage to attempt the mocks. I'll answer this. Yeah. Okay, so firstly, I know IPMAT comes only once a year, but don't put that much pressure on yourself, because the more pressure that you put on yourself, the more that you will end up blanking out. Okay. The second thing is that what I learned while writing mocks was that you learn concepts as you're writing the mocks. So once you finish writing the mocks and you do your analysis on where you went wrong, and you try to understand where you went wrong in the different questions, you will understand that you can learn various topics or the kind of topics that are asked in through the mocks itself. So take that as like an encouragement. Say, okay, I'm going to learn new topics, so I'm going to attempt the mock. And after attempting the mock, I'll just say, okay, this topic, okay, it looks like I didn't understand this that much. Let me see how the question has been solved, etc. And that is how you learn the topic. Okay, I know there isn't that much time left, but you really do need to have faith in yourself, because it is the final 20 days left. Okay. I hope that helps. Yeah, it's okay to stop preparing for IPMAT. I mean,
I wouldn't recommend it because sometimes there is a huge gap between each exam and boards, and you can spend like 2 to 3 hours on IPMAT. But if there is not enough gap, then yeah, go ahead. It's okay. But as long as you've done sufficient amount of prep before and you do way more after. Okay, like answering to questions, so abhi like जिसने पूछा था, so one of my friends, उसने like she was preparing for it but could not crack it. So वो like Bangalore में ही है and वो she's preparing for this exam whimsically, and whether she can crack it or not. Like she's happy with her college. Like she's not in Christ, but I don't know her college. Like it's a mediocre college. Okay. So वो वहां से prepare कर रही है. She is very kind of कि हाँ होता है, that will definitely things work out well for me. नहीं होता है, she is not losing her hope क्योंकि उसने ऐसी प्रिपरेशन करी है, like she can crack. अगर वो कैट के लिए प्रिपरेशन करना चाहती है, she will be able to crack it. So your things, if that those things are not working out for you now, वो definitely help करेगा कैट के लिए. Don't lose your hope because at the end hope is like जिस पे हम rely करते हैं. Yeah, Hmm. I think we should wrap it up. And yeah. Are there any more questions? You can post it in the chat box. No, there is no BSc plus combination as such. IPM, there is no combination, no? I think you will never think about this fact when you will come here. Like Yeah, when you UPSC के come लिए it's here, totally different from MBA. yeah. So the thing is, when you come here in your first 3 years, every 2 months you'll have to learn 8 courses, where usually these 8 courses are spread out over 4 to 5 months for other college people. Okay, for us it's within 2 months. So like, there is I think there is some network issue. Uh, also there is some network issue from your end. Hello, I'm audible. Yeah, I think there was some network error from my side. I think we should like conclude the meeting. If we learn all concepts for sure, I think I have pretty well answered this question in the meeting. So, like, what I say, sector, I think we should wrap it up. Okay. So, are there any more questions? Okay, so, okay, then I think all of you can leave this okay. meeting. Okay, Yeah. right. Bye. All the best for the 2024 exam. Good luck. Good luck. I know you guys will do amazing. Uh, excited to see you as my junior.